नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स का ये मार्केट चैप्टर से कुछ क्विज क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द क्विज। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हिच मार्केट कंडीशन फर्म्स मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन? दीज आर द ऑप्शन। Yes, it is monopolistic competitions make only normal profit. Firms is a monopolistic market are price. Yes, taker, giver, maker, acceptors. Let's see. Yes, it is price maker. Oligopoly having identical product is known as collusive oligopoly, pure oligopoly, independent oligopoly, or none of these. Yes, it is pure oligopoly. In monopoly market, profit is maximum when MC equal MR, यानी marginal cost must be equal to marginal revenue, then monopoly market, okay, profit is maximum. Product differentiation is a features of, yes, कौन मार्केट का फीचर्स है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड इन, इनमें से कौन सा मार्केट के लिए एंट्री रेस्ट्रिक्शन है? यस, इट इज मोनोपोली मार्केट. डिमांड कर्व इज इलास्टिक इन, यस, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ मार्केट. कहाँ पे इलास्टिक है? इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. Demand curve is perfectly elastic in, yes, it is perfect competition. Demand curve is inelastic under monopoly. Profit under monopolistic competition in the long run is, yes, normal. In which market form price is equal to marginal cost in equilibrium? It is perfect competition. Which features distinguishes oligopoly from other market forms? Interdependence among firms. Homogeneous product means products are identical. Selling cost is significant under monopolistic competition. Demand curve under oligopoly is indeterminate. Which market form demand curve is stiffer as compared to monopolistic competition? Monopoly. In which market advertisement cost is least? ऑलमोस्ट नील जैसा है.
Yes, it is monopoly market. Indian Railway is an example of, yes, Indian Railway कौन सा मार्केट में आता है? It is monopoly. Price determination is a measure of monopolistic competition. In monopolistic competition, there are large number of sellers. In which market there is no free entry of new firms? Yes, it is monopoly. Charging different price from different customers for the same good is called, है ना, एक ही सामान के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसको बोलेंगे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Price discrimination will be profitable only if the elasticity of demand in different sub-market is different. The firm and the industry is same in मोनोपोली मार्केट. मोनो मीन सिंगल, पोली मीन सेलर. उसमें जब सिंगल सेलर है तो फार्म्स और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है. एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस इज ऑलवेज इक्वल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो दीज आर द 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स. आपने कितना सही कर पाए डेफिनेटली कमेंट कीजिए. ओके, I'll try to bring in this way such types of question which will be beneficial for you. मिलेंगे अगले वीडियो में. नमस्कार.